Today, this auditorium is not merely a hall filled with people, it is a space filled with stories. Stories of students who dared to dream, teachers who dared to believe, parents who stood quietly behind every success, and of course, young minds who discovered that when determination meets opportunity, extraordinary things happen. Today we celebrate the hands that worked tirelessly, the minds that refused to give up, the hearts that continued to believe, and the spirit that turned challenges into achievements. Yes, today we are here to celebrate excellence. But there's something even more beautiful about today because while we look back and applaud those who have achieved, we also look ahead to those who are now ready to lead from achievement to responsibility, from applause to accountability, from being inspired to becoming an inspiration. That is the journey we celebrate today. Ladies and gentlemen, welcome to a celebration where dreams meet destiny, achievement meets appreciation, and young minds step forward to embrace leadership. Welcome to a morning where each medal tells a story. Badges will carry responsibilities, where music will create memories, and where applause will say, "We see you, we believe in you, and we are so very proud of you." On behalf of Balbharti Public School Dwarka, it is my privilege to welcome you all to this Appreciation Day and Investiture Ceremony 2026, a celebration of achievement, gratitude, leadership, and above all, a celebration of the extraordinary journey of our young Balbhartians. Welcome once again. It is my honor to introduce our esteemed chief guest for today's special occasion. We are privileged to have amongst us Shri Kishore Kumar Rewala, a distinguished police officer with an extensive and accomplished career spanning more than 3 decades, 30 years of dedicated service. Shri Rewala joined the esteemed Delhi Police in 1991. His professional journey subsequently took him into several significant leadership and security responsibilities as an Assistant Commissioner of Police. Among his notable assignments have been ACP Operations, Central District, Chief of Delhi High Court Security, Chief Security Officer to the Honorable Home Minister and Honorable Defense Minister. He has also served in the operational and field assignments and ACP, and most importantly, to us today, he is presently serving as ACP Subdivision Dwarka. So, your journey is a remarkable example of what happens when discipline meets dedication, responsibility meets leadership, and service becomes a way of life. And that makes your presence here today more particularly meaningful and justified. On a day when we are celebrating our young achievers and investing our young leaders with responsibility, your distinguished career offers our students a living example of the values we hope they carry forward. Values like integrity, courage, discipline, responsibility, and most importantly, service to society. We are deeply honored to have you with us today. Ladies and gentlemen, may I request you to join me in extending a very warm welcome to our esteemed chief guest, Shri Kishore Kumar Rewala, ACP Subdivision Dwarka. May I request our Honorable Principal Ma'am to present the token of our reverence to Mr. Rewala. Please, ma'am. And there are people who lead from the front. And there are those who create an environment where others discover the courage to lead. Today, as we celebrate achievement, excellence, and leadership, it is only fitting that we pause to acknowledge the person who provides the vision and direction that shape the journey of our school. They say a school is built of bricks and mud walls, but a great institution like ours is built with vision, values, and people. And at the heart of that journey is its leadership. You guessed it right. It is my privilege
to welcome the guiding force of Bal Bharati Public School Dwarka, our respected principal, ma'am, Miss Suruchi Gandhi. And therefore, this is a moment not merely to welcome our ma'am to the event, but to honor her presence, acknowledge her leadership, and express our gratitude for her guidance. It is now our privilege to felicitate our respected ma'am, Ms. Suruchi Gandhi, as a mark of our appreciation and love. May I kindly request the Vice Principal, Ms. Sandhya Kakkar, and Headmistress, Ms. Aishwarya Taneja, to kindly come forward and felicitate ma'am. Let us take a moment to experience something truly beautiful, the magic of voices coming together in harmony. You know, a single voice can touch the heart. But when many voices blend together, they create a melody that can fill an entire space with warmth and emotion. That is the beauty of a choir. Different voices, different tones, yet perfectly united in one rhythm and one song. And perhaps that is also a beautiful reflection of our school community. Each one of us, unique yet connected by a shared spirit of learning, friendship and togetherness. और आज के कोयर की तो बात ही कुछ और है. त्यागो हि महात्म बलम, सत्यम शिवम सुंदरम, दानम वीरस्य भूषणम, जय जय सूर्यपुत्र, जय जय दानवीर. अर्थात मैं कर्ण हूँ, टूटा मगर बिखरा नहीं, धूप में जलकर भी कभी किसी से मैं उखड़ा नहीं, हार गया रण, जीत गया मैं, यही रहा मेरा धैर्य. Dear audience, please put your hands together for the musical extravaganza.
इतिहास के पन्ने हमें सिर्फ घटनाएं नहीं सुनाते, वे हमें आईना दिखाते हैं। और कभी कभी हजारों वर्ष पुरानी कोई कथा आज के मनुष्य से भी एक बहुत बड़ा प्रश्न पूछ जाते हैं कि तुम्हारे पास ज्ञान तो है, पर क्या तुम्हारे पास विवेक भी है? कभी एक युग था जहां राज सिंहासन के लिए भाई भाई के सामने खड़ा हो गया, जहां गुरु और शिष्य युद्ध भूमि में आमने सामने आए, जहां मित्रता ने धर्म को चुनौती दी और जहां एक माँ का मौन एक पुत्र के जीवन का सबसे बड़ा प्रश्न बन गया। वह था महाभारत। कुरुक्षेत्र की धरती पर शंख तो बजे थे युद्ध के, पर असली युद्ध मनुष्य के भीतर चल रहा था। धर्म और अधर्म का, सत्य और मोह का, कर्तव्य और भावनाओं का, और सबसे बढ़कर विद्या और विवेक का। महाभारत हमें यही सिखाती है कि जीवन का सबसे कठिन प्रश्न यह नहीं है कि हम क्या जानते हैं, बल्कि यह है कि जो हम जानते हैं उसका सही समय पर सही निर्णय में उपयोग कर पाते हैं या नहीं। जी हाँ, आज की हमारी प्रस्तुति इसी शाश्वत प्रश्न को महाभारत के कुछ अमर पात्रों से आपके समक्ष रखती है। आज हम उस युग से सिर्फ कहानी सुनने नहीं आए हैं, हम आए हैं उस युग से अपने आज के प्रश्न पूछने। तो आइए उस प्रकाश को प्रज्वलित करें जो हमें केवल देखने का नहीं बल्कि सही देखने का विवेक दे। उस प्रकाश को प्रज्वलित करें जो हमें केवल ज्ञान नहीं बल्कि ज्ञान का सही उपयोग सिखाए। और उस प्रकाश को प्रज्वलित करें जो विद्या को विवेक से, विवेक को विकास से और विकास को मानवता से जोड़ दे। आइए साक्षी बनिए उस यात्रा के, जहाँ विद्या से विवेक जन्म लेता है, विवेक से विकास और विकास से मानवता का उत्कर्ष। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, बाज चंद्र की घड़ी की तुम गुहार दो। है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, बाज चंद्र की घड़ी की तुम गुहार दो। मान मान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उधार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। मान मान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उधार दो। आरंभ है प्रचंड। करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। विष्णु की पुकार है, ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। मान मान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड, आरंभ है प्रचंड, आरंभ है प्रचंड।
जिस प्रकार सूर्य कभी अंधकार से नहीं डरता, उसी प्रकार सत्य कभी असत्य से नहीं हारता। मनुष्य सोचता है कि वह असत्य के सहारे क्षणिक सुख पा सकता है, परंतु वह यह भूल जाता है कि असत्य के नींव पर खड़ा यह जीवन एक दिन अवश्य ढह जाता है। सत्य कठिन है क्योंकि वह हमें हमारी गलतियों का आईना दिखाता है। सत्य कड़वा है क्योंकि वह हमारे अहंकार को तोड़ देता है। जहाँ असत्य होता है वहाँ विनाश निश्चित है। जहाँ विद्या है वहाँ प्रकाश है। जहाँ विवेक है वहाँ सत्य है, और जहाँ सत्य है वहीं सच्चा विकास है। हे केशव, ये कैसा समय आ गया है जहाँ मुझे मेरे शत्रु दिखाई देने चाहिए थे, वहाँ तो मेरे अपने ही खड़े हैं। वह देखिए, पितामह भीष्म जिनकी गोद में मैं खेला। वहाँ देखिए, गुरु द्रोणाचार्य जिनसे मैंने धनुर्विद्या सीखी। और वहाँ मेरे चचेरे भाई। क्या मैं उन्हीं पर बाण चलाऊं? गोविंद, मैं कैसे लड़ूं? इस युद्ध में तो हार ही हार है। जीत गया तो क्या जीतूंगा? माधव, मेरे तो हाथ ही कांप रहे हैं। गांडीव हाथों से छूट रहा है। ये शरीर साथ नहीं दे रहा है। अर्जुन, तुम्हारा दुख भ्रम से उत्पन्न हुआ है। सच्ची विद्या अज्ञान को दूर करती है। यहाँ ना कोई गुरु है, ना कोई मित्र, और ना ही कोई सगे संबंधी। सब में मात्र एक ही प्रकाश है जो तुम्हारे अंदर भी जल रहा है। वो है अविनाशी आत्मा। हे कृष्ण, इस युद्ध में मैं जीत कर भी क्या पाऊंगा? राज्य, सुख, वैभव। जब अपने ही नहीं बचेंगे तो इन सब का क्या मूल्य? अर्जुन, युद्ध करना ही तुम्हारा धर्म है। मधुसूदन, यह युद्ध मुझे अधर्म प्रतीत हो रहा है, और हर जगह मुझे मृत्यु ही मृत्यु दिखाई दे रही है, और वो भी अपने ही परिवार की मृत्यु। क्या अपने ही कुल का नाश करना धर्म कहलाएगा? पार्थ, यही तुम्हारी परीक्षा है। विद्या केवल शस्त्र चलाना नहीं सिखाती, बल्कि धर्म का मार्ग भी दिखाती है। तुम्हारा कर्तव्य क्या है? मेरा कर्तव्य, यदि मैं युद्ध करूं तो अपने ही बंधुओं का वध करूंगा। यदि ना करूं तो कायर कहलाऊंगा। दोनों ही मार्ग मेरे विनाश की ओर ले जा रहे हैं। पार्थ, मोह त्यागो और विवेक से निर्णय लो, ना कि भावनाओं के बंधन से। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। इसलिए फल की चिंता किए बिना अपना कर्तव्य करो पार्थ, कर्तव्य करो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भुः मा ते सङ्गोत्स्व कर्मणि। विवेक का रूप लेती है, तभी सच्चा विकास आरंभ होता है। था दिव्य पुरुष था, दिव्य अंश था, काल भी मुझसे डरता। कर दूं परास्त देवों को भी, इतना भुजाओं में बल था। तेज अलौकिक चेहरे पर था, क्रोध में सूर्य सा जलता।
था वीर महाबट योद्धा, मेरा नाम दानवीर कर्ण था। जो भारती है पराक्रमी है कर्मवीर वो कर्ण हूँ मैं, जो कुरुक्षेत्र की मिट्टी के कणकण में है वो कर्ण हूँ मैं, जो सूर्यदेव की स्वर्णिम किरणें धरती में वो कर्ण हूँ मैं, जो प्राण दे दे दान में ऐसा दानवीर वो कर्ण हूँ मैं। जो भारती है पराक्रमी है कर्मवीर वो कर्ण हूँ मैं, जो कुरुक्षेत्र की मिट्टी के कणकण में है वो कर्ण हूँ मैं, जो सूर्यदेव की स्वर्णिम किरणें धरती में वो कर्ण हूँ मैं, जो प्राण दे दे दान में ऐसा दानवीर वो कर्ण हूँ मैं। त्यागी हुआ कोई ना हुआ है मुझसा योद्धा कोई, दान में मुझसे प्राण भी लो यूं दानवीर ना हुआ कोई। मित्र धर्मी था मेरा पर मित्र का सब कुछ हार गया, जिस मित्र ने साथ दिया मेरा उस मित्र पे जान को मार गया। हुई थी मेरी मृत्यु जब सारा संसार ही मौन हुआ, हुए बहुत से योद्धा पर मुझ कर्ण के जैसा कौन हुआ, हुए बहुत से योद्धा पर मुझ कर्ण के जैसा कौन हुआ, हुए बहुत से योद्धा पर मुझ कर्ण के जैसा कौन हुआ। जो भारती है पराक्रमी है कर्मवीर वो कर्ण हूँ मैं, जो कुरुक्षेत्र की मिट्टी के कणकण में है वो कर्ण हूँ मैं, जो सूर्यदेव की स्वर्णिम किरणें धरती में वो कर्ण हूँ मैं, जो प्राण भी दे दे दान में ऐसा दानवीर वो कर्ण हूँ मैं। जो भारती है पराक्रमी है कर्मवीर वो कर्ण हूँ मैं, जो कुरुक्षेत्र की मिट्टी के कणकण में है वो कर्ण हूँ मैं, जो सूर्यदेव की स्वर्णिम किरणें धरती में वो कर्ण हूँ मैं, जो प्राण भी दे दे दान में ऐसा दानवीर वो कर्ण हूँ मैं। पूरी दुनिया देखेगी शक्ति क्या होती है। मित्र, शक्ति का अर्थ केवल विजय नहीं होता, कभी कभी सत्य हार कर भी जीत जाता है। मुझे सत्य नहीं सिंहासन चाहिए। कर्ण, तुम्हारी विद्या और शक्ति मेरे साथ है, विजय हमारी होगी, सिंहासन मुझे मिलेगा। मित्र, मैं आपका ऋणी हूँ, पर क्या हमारा मार्ग धर्म का है? धर्म वही है जो शक्ति से स्थापित हो, और मित्रता ही मेरा धर्म, और यही मेरा द्वंद्व। मैं जानता हूँ कि धर्म कहाँ है, पर मेरी मित्रता मुझे बांधे हुए है। पुत्र, यह शब्द आज? पुत्र तुम मेरे ज्येष्ठ हो। परंतु माता, यह सत्य आज क्यों? जब पूरे समाज ने मुझे सूत पुत्र कहा, तब आप कहाँ थी? अगर सूत पुत्र होने का यह लांछन आज तुम पर ना लगता, तो इससे भी बड़ा लांछन मुझे सारा जीवन सहन करना पड़ता। क्या इसे स्वीकार करते तुम? किस लांछन की बात कर रही हैं आप? वही लांछन जिसके डर से एक विवश माँ को अपनी ममता के पहले फूल का त्याग करना पड़ा। पुत्र, एक माँ समाज से हार गई थी। परंतु आज आप मुझसे क्या चाहती हैं? पांडवों के साथ आ जाओ। नहीं, यह नहीं हो सकता। कौरवों को विजय दिलाना मेरा धर्म है। मैं दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ सकता। मेरे पुत्र। माता, मैं आपकी झोली में आपके 4 पुत्रों का जीवन डालता हूँ। मैं यह वचन देता हूँ कि मैं अर्जुन को छोड़कर और किसी पांडव का वध नहीं करूंगा। पूरा विश्व माता कुंती को 5 पुत्रों की माता के रूप में जानता है, और इस युद्ध के अंत में भी यही सत्य रहेगा। या तो अर्जुन रहेगा या मैं।
आज निर्णय होगा। हाँ, आज निर्णय होगा। आज दो योद्धा आमने सामने हैं। रुको, मुझे अपने रथ का पहिया निकालने दो। धर्म के अनुसार एक निहत्थे पर वार मत करो। पाठ स्मरण करो, अभिमन्यु भी निहत्था था। धर्म की रक्षा के लिए कठोर निर्णय आवश्यक है। मधुसूदन, आज मैं पराजित हो गया। क्या यही मेरा भाग्य था? क्या मेरी सारी शक्ति, मेरी सारी विद्या व्यर्थ चली गई? कर्ण, तुम पराजित नहीं हुए हो, बल्कि तुमने अपने जीवन को एक कठिन धर्म के साथ जिया है। धर्म? क्या मित्रता निभाना ही मेरा धर्म था? जब मुझे सत्य ज्ञात था, फिर भी मैं अधर्म के साथ खड़ा रहा। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। कर्ण, विद्या तुम्हारे पास थी, परंतु विवेक तुम्हें सही समय पर सही निर्णय नहीं दे पाया। तुम महान थे, दानवीर थे, परंतु जब धर्म और मोह के बीच का चयन का समय आया, तब तुमने मोह को चुना। हाँ, मैं जानता था कि सत्य कहाँ है, पर मेरी मित्रता, मेरा कर्तव्य मुझे बांधे हुए था। कर्तव्य वही होता है जो धर्म के साथ हो। यदि कर्तव्य अधर्म के साथ जुड़ जाए तो वो केवल बंधन बन जाता है। याद रखो, जीवन में सबसे बड़ा ज्ञान यह नहीं कि तुम कितना जानते हो, बल्कि यह है कि तुम सही समय पर निर्णय ले पाते हो या नहीं। केशव, तो क्या मेरा जीवन असफल रहा? नहीं कर्ण, तुमने दान दिया, सम्मान दिया और अंत तक अपने वचन का पालन किया। तुम्हारा जीवन एक सीख है कि केवल प्रतिभा और शक्ति पर्याप्त नहीं होती है, उनके साथ विवेक और सत्य का होना भी आवश्यक है। विद्या से विवेक, विवेक से विकास और विकास से मानवता का उत्कर्ष। यह प्रस्तुति तो समाप्त हुई, परंतु क्या कर्ण का प्रश्न भी समाप्त हो गया? जी नहीं, क्योंकि कर्ण उस शाश्वत प्रश्न का प्रतीक है जिसमें प्रतिभा भी है, सामर्थ्य भी है और अवसर भी। आज हमारे पास कहीं अधिक विद्याएं हैं, ज्ञान है, तकनीक है, अवसर है और असीम संभावनाएं हैं, पर यह प्रश्न आज भी उतना ही प्रासंगिक है। क्या हमारी विद्या हमें विवेकशील बना रही है
और यही वह क्षण है जब हम अपने विद्यालय की ओर दृष्टि डालते हैं, क्योंकि ये मूल्य केवल मंचीय अभिव्यक्ति नहीं थे, यह हमारे विद्यालय की शैक्षिक संस्कृति की आत्मा है। बीबीपीएस द्वारका का उद्देश्य है कि विद्यार्थी केवल उत्कृष्ट ना बने, वह विवेकशील भी बने। वे केवल सफल ही ना हो बल्कि सार्थक भी हो। वे अकेले आगे ना बढ़े बल्कि सभी को साथ लेकर बढ़े। हमारी आधारशिला ही समग्र विकास और मूल्य आधारित शिक्षा है, जहाँ ज्ञान के साथ साथ सम्मान, उत्तरदायित्व, धैर्य और सहयोग को समान महत्व दिया जाता है। वर्षों से बीबीपीएस द्वारका में ज्ञान का दीप निरंतर प्रज्वलित है। प्रतिभाएं मंच पर निखर रही हैं, खेल के मैदानों में टीम भावनाएं विकसित हो रही हैं और तकनीक ने नवाचार के द्वार खोले हैं। विद्या हमारी नींव, विवेक हमारी दिशा, विकास हमारी पहचान और यही है हमारा विद्या विवेक विकास। Like this, मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। And today, ladies and gentlemen, as we celebrate our achievers and welcome our new leaders, we see that spirit of dreams, determination and courage all around us. But every young person who finds the courage to fly needs someone who first teaches them to believe that they have wings. Someone who sees potential before it becomes achievement, and it is that vision that gives a school its direction. And it is my privilege today to invite the person who stands at the helm of that vision at Bal Bharti Public School, Dwarka, our respected principal ma'am, Ms. Suruchi Gandhi. And now we have the privilege of listening to that voice of vision, wisdom and inspiration. Dear audience, please join me in welcoming our revered principal ma'am with a heartful round of applause. Morning to all of you. Appreciation Day. This happens to be one of my favorite celebrations in the school. Why? Because nothing is more overwhelming than see little children who were handed over to us years back now blossom into singers, dancers, anchors, players and leaders. So these children being embellished with leadership roles gives me a lot of happiness to see how well they are groomed and trained. Ladies and gentlemen, if you had seen closely this school evolve over the years, you must have noticed that apart from infrastructure, we invested a lot in these children, in imbuing these life skills in these children. School can have swimming pools, school can have air-conditioned rooms, schools can have a fleet of good teachers, very good coaches, faculty, playgrounds. This can come. But what schools lack today is training, the Vivek part of it, the power to have the discretion between what is good and what is bad. Life will present a plethora of choices, and very often we will be tempted to take a path which is easier, which is relatively simpler and more rewarding. We all are confronted with such opportunities day in and day out, where there is an easy way out of everything. I have the proud privilege of welcoming ACP Riwala here, who is, apart from being an ACP Dwarka, he is a proud parent of our school. I remember Sarthak Riwala, who is doing very good now also. So there are people who have faith, who have trust for generations in the Bal Bharti group of schools. Why?
Because while giving them the wings of modernity, wings of independence, you see that our children are firmly grounded in the roots of tradition. And that is a peculiar feature of Balbharti schools. You will not find this kind of a humility, this kind of a value system in our so-called many modern schools. And that is what I keep on saying, that schools can produce doctors and engineers, but we've had only one Mother Teresa so far. So we have to teach children how to value others, how to respect others, how to coexist with all kinds of people. There's a lot of emphasis on inclusivity. Perhaps you might not have even come to know there are a lot of special children who are performing in this group. The school doesn't have any distinction, nor do the teachers treat them differently. So this is a redeeming feature of our school, where we value each and every person, whether it is a teacher, whether it is a student, whether it is a helper, whether it is support staff. Children know how to respect and how to value people. We don't encourage any kind of, ever since your children were small, you must have seen, we never encourage any kind of lavish birthday celebrations, any extravagant parties, and we rather teach them to celebrate their birthday with children who are not so privileged. Even for this Rakhi, we are inviting a group of children from orphanage, and children are going to celebrate Rakhi with them. So they are being taught how to value people and how to be thankful. Our excursions don't even always center around picnic spots, but they are taken to a gurudwara, they are taken to a temple, they are taken to a masjid, they're exposed to all kinds of religions and different communities. We have video conferences with all countries, even Pakistan, and children discuss about various problems that are confronting the world. We have MUN, where children debate about the problems the world is facing. We have international exchange programs where children who aspire to be, why aspire? I think the globe is shrinking fast and everybody has to sort of know what it is like in other countries. So recently we were awarded the British Council International Dimensions Award for integrating international dimensions in the school. The list of honors that children are getting for us is endless. I mean, if I go on to that, there are children who are performing all over the world. But what is important and what makes me proud is the fact that children are grounded. They are not like other children in other schools. So we've always impressed upon them that we are different, and we maintain our difference with pride. But our children are trained in such a manner that they can walk with the crowds and yet retain their identity. So this is all what this investiture is about. We are investing them with roles and responsibilities. I've always told them that this is not a badge as an embellishment which you can wear. This comes with a lot of responsibility. You have to be an example which younger students can emulate. So you yourself have to be very disciplined and ready to face all kinds of turmoil, all kinds of storms. What happens when a storm is approaching? The eagle bird does not hide itself somewhere. It perches itself up on a tree and waits for the right winds to come so that it can sail over these winds. So be like the eagle. Any kind of storm, any kind of turbulation, any kind of problems may come, but you don't have to break. Why is it that when you make it to engineering, why is it that when you make it to medical colleges, why is it that you break down? Why is it that you think of giving your life up? Because we have not trained you. We've not given you, as parents and even as educators sometimes, those life skills, that it's okay to fail.
It's okay to fail sometimes. It's okay not to get what you want. Life is not always fair. So if we start teaching them, and I request my teachers every day that we must give these life lessons to children every day. Teaching can wait. How important your grandparents are to you. How important the people in your family are to you. So these are the virtues that our children are always impressed upon, and you will yourself see how our children exhibit these virtues day in and day out. So I know you all are waiting very, very impatiently for the investiture. So congratulations to all of you, and congratulations to you all parents for having trained your children so well that today they are not only performing but they are also leading. Thank you very much for your time. We now arrive at a major milestone of Arohan, the Senior Student Council and Girl Up Crusaders investiture ceremony. This moment is about placing trust in young shoulders and empowering them to lead our school with integrity. We invite our Senior Student Council to kindly come forward for their investiture. Council President Kavishka Bhardwaj and Abhiraj Singh, Council Vice Presidents Raghav Sachdeva and Gitanjali, Discipline President Rishika Singh and Vice President Khanat Gupta, Co-Curricular President Sukriti Sharma and Vice President Adhika Chaturvedi, Sports Captain Shauravi Chauhan and Devanshi, Sports Vice Captain Shiraj Bali and Priti Bhatia. And lastly, for our school captains of discipline, Adya Shukla, Ashna Malik, Ashvika Khetrapal, Avni, Rita Dingwa, Devsha Nagpal, Ishan Sinha. Everyone, my name is Anaya and I am the Vice President of the News and Broadcasting Club. Good morning everyone, my name is Nirvi Kapoor and I am the President of the News and Broadcasting Club. Good morning everyone, I am Samaya Saxena and I am the Vice President of the Social Media Club. Good morning everyone, I am Vanya Garg and I am the President of Social Media Club. Good morning everyone, I am Manvi and I am the Vice President of Interact Club. Good morning everyone, I am Pranavi Joshi and I am the President of Interact Club. Good morning everyone, I am Mishita Khulbe and I am the Vice President of Generation Global Club. Good morning parents, teachers, the Principal Ma'am, Headmistress Ma'am and Vice Principal Ma'am. I am the President of Generation Global. Good morning everyone, I am Snigdha Chatterjee and I am the Vice President of the Health and Wellness Club. Good morning everyone, I am Priya Taneja and I am the President of the Health and Wellness Club. Good morning everyone, I am the Vice President of Financial Literacy Club and I am Diva Mehta. Greetings to all, I am Vidhi and I am the President of the Financial Literacy Club. Good morning everyone, myself Adya Mitra and I am the Vice President of Consumer Awareness Club. Good morning everyone, I am Pragun Batra, I am the President of Consumer Awareness Club. Good morning everyone, I am Isani Manchanda and I am the President of the Nature Club. Good morning everyone, I am Manda Sharma and I am the Vice President of Nature Club. Good morning everyone, I am Adya Karan and I am the President of Disaster Management. Good morning everyone, I am Adishi Singh and I am the Vice President of Disaster Management Club. Good morning everyone, my name is Dikshita Acharya and I am the Vice President of ATL Club. Good morning everyone, my name is Vedansh Tyagi and I am the President of ATL Club. Good morning everyone, my name is Gaurika and I am the President of Little Scientist Club. Good morning everyone, my name is Vanshika Saroha and I am the Vice President of Little Scientist Club. Good morning, Honorable Principal Ma'am, respected teachers and my dear parents. So, I am Charu Rawat, the President of the Literary Club. Good morning everyone, I'm Arjun Sharma and I'm the Vice President of the Literary Club. Good morning everybody, I am Shivika and I am the President of UN Prahari Club. Good morning everyone, I am Soumya Tyagi, the Vice President of UN Prahari Club.
Good morning everyone, I'm Advik and I'm the Vice President of the Artificial Intelligence Club. Good morning everyone. I'm Medhansh Gulati and I'm the President of the Artificial Intelligence Club. A very good morning to each one of you present here. I am Kaveri Upadhyay and I am the Vice President of the Heritage Club. Good morning respected all. I am Kashri Singh Tewatia and I am the President of Heritage Club. Good morning everyone, I'm Bharvi Davgar, the Vice President of the Best Outer Waste Club. Good morning, everybody. I am Aradhya Hoda and I am the President of the Best Outer Waste Club. Good morning everyone. My name is Taisha Pant and I am the Vice President of the Culinary Arts Club. Good morning everyone. My name is Samiksha Yadav and I am the President of Culinary Club. Good morning everyone. My name is Adya Madan and I am the President of Foreign Language Club. Good morning everyone. I am Samarth and I am Vice President of Foreign Language Club. Greetings everyone, I am Vanya Yadav, the Vice President of Business and Enterprise Club. A very good morning to each one of all present here. I am President of Business and Enterprise Club. Good morning everyone present here. My name is Naman Kumar Vats and I am the Vice President of Cyber Safety Club. Greetings everyone, my name is Ananya and I am the President of the Cyber Safety Club. I solemnly pledge to discharge my duties as a member of the Prefectorial Board with integrity, fairness and dedication. I shall lead not by authority but by example, with courage to do what is right, humility to listen, and responsibility to uphold the trust placed in me. I shall always put the honor, pride and prestige of my school before myself and strive to represent it with dignity at every forum. I should respect every individual, uphold the values and traditions of my school, and ensure that my words and actions reflect the character of a true leader. I vow to be accountable for my actions, fair in my judgment, and steadfast in my responsibilities. With pride in my school, faith in my duties, and commitment to my fellow students, I accept this responsibility and pledge to serve to the best of my ability. We request our honorable chief guests and respected principal ma'am to join the newly elected council on stage for a group photograph. Yes, sir. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Yes. Courage and humility as our journey begins today. Moving forward, we now celebrate leadership rooted in equality, voice and opportunity. The Girl Up Crusaders initiative empowers young leaders to become advocates for inclusion and positive social change. We request our newly elected Girl Up office bearers 2026 to 27 to kindly come forward for their investiture. President Kavishka Bhardwaj, Vice President Manat Arora, Secretary Sukriti Sharma, PR Heads Inaya Sharma and Kanak Gupta, Content Heads Vidhi and Yuvakshi Grover, Graphic Heads Yasha Rajput and Priyanshi Malhotra. Let's have a round of applause for them. We now request our chief guests and respected principal ma'am to join our Girl Up leaders on stage for a group photograph. Yes. In spite of his very, very busy schedule,
I don't want our children to lose or miss the very precious advice that he may offer to them. So I request Mr. Rewala to kindly come on the stage and address the gathering. Please, sir. Respected Principal Ma'am, Vice Principal Chandrakar Ma'am, Headmistress, सभी टीचर्स, पेरेंट्स, स्टूडेंट्स, बाल भारती स्कूल से मेरा बहुत पुराना नाता है। मेरे दोनों बच्चे इसी स्कूल से पास आउट हैं। बहुत टाइट शेड्यूल था मेरा, क्योंकि 10 बजे से आज हमारा एक जन सुनवाई प्रोग्राम होता है हर पुलिस स्टेशन में, और मुझे एक पुलिस स्टेशन को हेड करना था, लेकिन मेरी बेटी ने बोला कि नहीं पापा आपको जाना है। तो मुझे बच्चों के उसमें मुझे आना ही पड़ा। मैंने कहा कि मैं थोड़ा लेट हो जाऊंगा, अगर कोई भी कंप्लेंट आता है तो उनको थोड़ा बियर करिएगा। थैंक यू मैम। जिस तरीके से आज यहाँ एक प्रोग्राम देखने को मिला, मैं आपको इस मंच के माध्यम से जितने भी पेरेंट्स यहाँ पे हैं, मेरी 35 इयर्स प्लस जो है पुलिसिंग हो गई, लेकिन मैंने कभी भी अपने बच्चों को अकेला नहीं छोड़ा। कभी अपने बच्चों को ये फील होने नहीं दिया कि पापा आप हमारे साथ बैठ के बात नहीं करते, या आप हमें समय नहीं देते, या आप हमारी प्रॉब्लम्स को शेयर नहीं करते, या आप हमारी प्रॉब्लम्स जो हम आपको बताते हैं उसका कोई सॉल्यूशन नहीं देते। तो आज उन सब के लिए मेरे पास इतना प्लस पॉइंट है कि मेरे दोनों बच्चे, जो कभी इस स्कूल में एक नीचे से टॉप करता था, एक ऊपर से टॉप करता था, और दोनों बच्चे जो है, मेरी बहुत बार गांधी मैम से जो है इस बात पे डिस्कशन होता था। मेरे बेटे का जो है रिपोर्ट कार्ड मोस्टली मैडम से ही मिलता था। मेरी वाइफ कई बार कहती थी मुझे कि मैं पेरेंट्स टीचर उस मीटिंग में नहीं जाऊंगी, आप जाइए। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं जाता हूँ। मैं उन सब बातों को डिस्क्लोज नहीं करूँगा क्या बातें होती थी, लेकिन मैंने हमेशा बच्चों को जो है एक फ्री हैंड दिया, और फ्री हैंड देने के साथ साथ उनको सिर्फ इतना कहा कि जो आपके मन में आए वो करना है। कभी भी इस तरीके का प्रेशर नहीं दिया, क्योंकि मैंने राजस्थान जयपुर यूनिवर्सिटी से बीएससी बायोसाइंस से मैंने ग्रेजुएशन किया। मुझे डॉक्टर बनना था, और कुछ ऐसा अनफॉर्चुनेट रहा कि मैं डॉक्टर नहीं बन पाया। तो जो मैं अगर डॉक्टर बन जाता तो शायद मैं आप यहाँ खड़े होकर आपको शायद एड्रेस नहीं कर रहा होता। तो डेस्टिनी आपकी बिल्कुल आपको वहाँ ले जाएगी जहाँ आपको ले जाना है। तो प्लीज़ कभी भी आप अपने बच्चों को प्रेशर में मत डालिए, कभी भी आप अपने सपने उनके ऊपर मत थोपिए कि आपने क्या बनना था और आप नहीं बन पाए, और आप अपने बच्चों को जो है उस चीज़ में देख रहे हैं कि नहीं मैं डॉक्टर नहीं बन पाया, मैं पायलट नहीं बन पाया, मैं आईएएस नहीं बन पाया, मैं आईपीएस नहीं बन पाया, तो मेरा बेटी या मेरी बेटी जो है बने तो मुझे अच्छा लगेगा। सबको अच्छा लगता है, लेकिन कम से कम आप अपने बच्चों पे अपनी जो चीज़ें हैं वो मत थोपिए। मेरा हमेशा, क्योंकि मेरा बहुत ही बीइंग ए पुलिस अफसर ऐसा एक्सपीरियंस रहा है कि ऐसे पेरेंट्स जिन्होंने बच्चों के ऊपर बहुत प्रेशर डाला है, और बाद में उन बच्चों ने कुछ ऐसा इंसिडेंट किया, कुछ ऐसा एक्ट किया जो रिपेयरेबल नहीं था। वो बच्चे जो है उनके हाथ से निकल गए, वो बच्चे अपनी लाइफ को जो है उन्होंने लॉस कर दिया। तो ऐसा मत करिए। जिस तरीके से आज का जो मंच है, इस मंच से जो एक एजुकेशनल एक मैसेज जो जा रहा है वो यही है
कि आपकी अपनी जो एजुकेशन है वो सिर्फ इसलिए नहीं है कि आपने कुछ डिग्री ले ली और उसके बाद में आप सब कुछ सोसाइटी के लिए या आपका जो करैक्टर है आप उसको भूल गए। आदमी किसी भी लेवल के ऊपर पहुंच जाए, लेकिन अगर आप वो ज़मीन से जुड़ा रहे, उसको क्या करना है, अगर वो बहुत ज़्यादा ऊपर पहुंचने के बाद में भी अगर वो अधर्म के साथ खड़ा है, अगर वो असत्य के साथ खड़ा है, अगर वो उसके अंदर धैर्य नहीं है, अगर उसके अंदर गरीब के बारे में सोचने की जो है एक भावना नहीं है, अगर वो हमेशा जो है अपने ही बारे में सब कुछ सोचता है, अगर उसके अंदर चोरी करने की भावना है, अगर उसमें जो है राष्ट्र का प्रेम नहीं है, अगर उसके अंदर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिससे कि जो है सोसाइटी का जो है जहाँ से वो निकला है उस समाज का उन्नति ना हो, फिर उस फाइनली मैं आपसे यही कहूँगा कि एजुकेशन हर उस चीज़ का जो है इलाज है, लेकिन उसको एक साइंटिफिक रखिए, एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपने बच्चों को दीजिए, जिससे कि अगर वो आपके तार्किक रूप से अगर किसी चीज़ को कह पाएँ, कोई भी आदमी उनको बेवकूफ़ नहीं कर पाए। अगर कोई बच्चा आपके सवाल, आपका घर में भी अगर आपसे कोई पूछ रहा है, टीचर से कोई अगर आपका सवाल पूछ रहा है, तो उसको टालिए मत, उसको एक साइंटिफिक वे में उसको रिप्लाई करिए, जिससे कि उसको आगे बढ़ने के लिए और रास्ता खुल जाएगा। तो मेरा सभी टीचर से, प्रिंसिपल मैम से, अभी सभी अपने जितने भी पेरेंट्स आए, सभी से जो एक रिक्वेस्ट है कि आप बच्चों को इस प्रेशर में मत डालिए। बीइंग ए पुलिस अफसर मेरे को बहुत इस तरीके का एक्सपीरियंस है, बहुत सारी फैमिलीज़ का मैं वो रिपेयर तो नहीं कर पाया, लेकिन आगे आने वाले टाइम में इस तरीके का नुकसान ना हो, इस तरीके की मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। थैंक यू। Excellence is never defined by the milestones alone, but by the vision, values, and the people who make those milestones possible. Today, we celebrate not just what we have achieved, but the journey that continues to inspire us to aim bigger, dream higher, and make a meaningful difference. Let's take a glimpse at our achievements through the school presentation. Public School Dwarka beautifully blends the wisdom of India's traditional education system with the possibilities of modern technology, reflecting the vision of NEP 2020. The school nurtures timeless values such as respect, integrity, empathy, discipline, and seva, while fostering curiosity, creativity, critical thinking, and innovation. Through Indian knowledge systems, art and culture, experiential learning, storytelling, and value-based education, students remain rooted in their heritage. At the same time, smart classrooms, AI, digital learning, coding, innovation labs, and technology-enabled projects equip them with the skills required for the 21st century. Thus, the school creates a meaningful blend of roots and wings, preserving the wisdom of the past while empowering learners to shape the future, truly embodying the spirit of the NEP 2020. I shall now take you on a journey marked by milestones, driven by purpose and crowned with achievements. Bal Bharati Public School Dwarka was ranked #1 school for quality education in North India by nationwide magazine Education Today in 2025. Raising the flag of excellence higher, the school has once again etched its legacy by receiving the prestigious C4 School Excellence Award 2025 in collaboration with Brainfeed. Can I have a round of applause for the school, please? All these awards are a culmination of the effort of law kids. We are unstoppable as always. Bal Bharati Public School Dwarka has once again retained its stellar position among the top schools in Dwarka as recognized by the annual Times of India survey. Now, the biggest milestone this year has been that our school has been recognized for outstanding development of the international dimension in the curriculum by British Council for the 5th consecutive time. We have also won the extraordinary distinction of being a Microsoft Showcase School for the 4th time in succession. It doesn't get better than this. 52 educators from the school have been recognized as Microsoft Innovative Educator Experts for 25-26,
share innovative ideas and best practices with their peers all over the world. A total of 13 educators have earned the Google Certified Educator Level 1 certification, while 5 educators have achieved the Google Certified Educator Level 2 certification. The school has been bestowed with the India Scholar Award in recognition of its outstanding contribution to advancement in academic excellence. The winning streak continues as the school has been conferred with Pioneers in Future Skill Education Award by LogicWiz for championing future-ready learning and nurturing essential skills in young minds. So all those LogicWiz ID passwords that everybody has been getting, this is a culmination of the effort of your own kids. The prestigious commendation accorded by Sharp NGO and ASCI honors the school contribution to nurturing informed, responsible and media literate young minds and celebrates our commitment to equipping them with skills to question, analyze and navigate today's media landscape. Education Today also ranked Dwarka #1 in Quality Leadership Management at India School Merit Awards 2025-26. In recognition of the ongoing sustained efforts, the school was adorned with the Sustainability Superstar 2025 Award by Go Sharpner for its outstanding commitment towards achieving sustainable development goals. Continuing its legacy of excellence, our school has been felicitated with the prestigious Certificate of Appreciation by Times Icon for securing the second rank under the Leaders category in the Dwarka zone. The Academic Insights Education Excellence Awards and Summit 2024 honored our school principal, Ms. Ruchi Gandhi, as the Pragmatic Woman Leader in K-12 Education 2024 for her outstanding and commendable contributions towards the society and educational fellowship. The school was awarded by SIP Academy India for excellent performance in the SIP Arithmetic Genius All India Inter-School Contest 2024. I think all of us can clap louder. These achievements take a lot of hard work and effort of our kids, so I think they deserve a round of applause. The school was ranked #1 in New Delhi STEM education by Education Today for its unwavering commitment to academic excellence, innovation and future-ready learning. Akshika Chaudhary, Class 8 and Amartya Veer Srivastav from Class 9 successfully cleared Stage 1, the Ideathon round of the prestigious LogicWiz Ideathon 2026 held at IIT Bombay, and they bagged the Distinguished Silver Citation Award. The school was honored the esteemed Ecological Education Award for its outstanding contributions to environmental sustainability. The school was also accorded prestigious recognition with the Green Campus Award 2026 by the National EduTrust of India for its outstanding commitment to environmental sustainability during the Earth Day 2026 Green Campus Challenge. The school has also won the Distinguished International Eco Schools Green Flag Award 2026-27 in recognition of its sustained commitment to environmental stewardship and sustainable practices. Our school recently achieved remarkable success at the AI Delhi Grind District Level Competition 2025-26. Another proud achievement, the school proudly applauds Pratika Shah of Class 11A for creating an educational app, Sakhi Setu, dedicated to spreading awareness on menstrual and maternal health, which is now live on the Google Play Store. Inaya Sharma of 10th P has been selected to represent the school at the 2026 Sejong Regional Center of Expertise Sustainability Education Global Youth Camp Action for Tomorrow, organized by Sejong RCE, Republic of Korea. The school principal was adorned with the Institutional Leadership with Entrepreneurship Award at School Youth Ideathon, a national competition to nurture young innovators and problem solvers in schools across India. She was also conferred with the Award of Honor for Best Principal 2025 for excellence in sustainability and environmental stewardship. The school principal has also been honored by India AIDS NGO in collaboration with the National Medicinal Plant Board, Ministry of Ayush, Government of India, for her pivotal role in promoting ashwagandha as part of a national campaign on medicinal plants.
Continuing our streak of outstanding achievements, the school principal has been honored with the Inspiring Principal Award by the National Education and Human Resource and Development Organization. She has also been conferred with Asia's Finest Educator Award by Hummingbird Education for bringing out the best talent and producing best academic results in the International Olympiads 2025-26. She has been awarded the Best Principal Award by the India Talent Olympiad. The principal and Eco Club in charge were bestowed with the International Award for Excellence in Ecological Education and for exemplary leadership in promoting eco-friendly initiatives. She was also conferred with the Green Campus Visionary Award 2026 by the National EduTrust of India in recognition of her exemplary leadership and unwavering commitment to environmental sustainability during the Earth Day Green Campus Challenge. Now moving on to some of our sports achievements, Anshika of class 11D has been selected to represent India at the Special Olympics United 3x3 Basketball World Cup held in San Juan, USA. Can we have a huge round of applause, please? The crowning glory doesn't end here. Athar Goyal of class 10A was awarded a 3 lakh scholarship by the Delhi government for his achievements in judo. Another feather in our cap, Aryan Rao represented the school as part of the Bal Bharti basketball team which took part in the International School Sport Federation Championship held in Belgrade, Serbia. Ishan Upadhyay of class 9E and Shauravi Chauhan of class 11C won 2 gold medals each at the South Asian Jump Rope Championship held in 2026 at Colombo, Sri Lanka. Ladies and gentlemen, each of these milestones add a chapter to our legacy and every achievement strengthens our resolve to excel. The journey continues with greater dreams, deeper values and limitless possibilities. Proud to be a Bal Bhartiyan today and always. Thank you. Indeed, we all are proud to be Bal Bhartiyans, aren't we? And now we move to another very special segment of this day, the Parade of Achievers, and we begin with class 9 to 12. As we celebrate our young achievers today, let us remember that every accomplishment begins with a decision to try, continues with the discipline to persevere, and reaches its destination through determination. An award, dear audience, is not simply a certificate or a trophy. It is a reminder of the hours in the subject Artificial Intelligence. Avni, Pratha Tripathi, Avantika Singh, Khanak Gupta, Raghav Sharma, Sanskar Gupta, Shantanu Gupta, Shivansh Jaiprakash, Arya Garg, Ashna Malik, Anugrah Tiwari, Anvesha Aswal, Arnav Modi, Ishan Chattopadhyay once again, Ishan Sinha, Jasmitha Srivastav and Trisha Sharma. Can we hear it for them? Loudly. Class 10 Sanskrit Communicative, Ananya Ray, Anvesha Aswal, Ishan Chattopadhyay once again and Jasmitha Srivastav. Mathematics, Ishan again, Ishan Sharma, Shantanu Gupta, Aravir Malik, Ahan Das and Anvesha Aswal. For science, I would call upon Shivansh Malik and Yakshit Yadav. In social science, we have Ishan Chattopadhyay again. And for class 10 English, I would call upon Khyati Singh. The applause should stop. It is an achievement. Come forward, children. Moving to class 12 achievers. In business studies, we have Ahana Singh. Ahana Singh, class, she's passed out now. Adya Gupta, Aditi Sembal, Vanshika Suri and Pari Yadav in painting. In artificial intelligence, I would call upon Shreya Thakral, Yatharth Ujjwal, Akshat Tiwari, Anvesha Yadav,
doesn't stop here. We have Competitive Excellence Award, MVPP. The awardees are Raj Narayan Datta, rank 20 with a proud 87%. Arnav Handa, rank 22, 86%. Yuvan Gupta, rank 29, 82.5%. Arnav Singh Adhikari, rank 34 with 80%. Samni Chaudhary, rank 34 again with 80%. Ojas Saini, rank 36 with 79%. Marcelina Burman, rank 36 again with 79%. Smart Sharma, same rank 36, 79%. Saksham Thakur, rank 22 with 86%. Arush, rank 49 with 72%. Ashmita, rank 63 with 65%. Swasti, rank 65 with 64.5%. And Arshia, rank 87 with 53.5%. Congratulations, dear achievers. Coming to the Sporting Laurel Award, I would call upon Ishan Upadhyay of class 9E for skipping. Okay. Before we continue further, I would request the Honorable Vice Principal and Headmistress Ma'am to pose for a photograph with the achievers. Really worked hard. 100% marks. The awardees are Anaita Maheshwari, Social Science, Adya Mitra in French, Arush Chaudhary in Social Science. For Sporting Laurels Award, I would call upon Manthan Singh for Gymnastics and Arnav Sharma for Equestrian. For Maestro Melodies Award, I would call upon Anisha Khair for Western Music and Ayushman Singh for Indian Music. Star Performer in Dance Award, I would call upon Samaira Saxena for excellent performance in Western dance. Coming to the Competitive Excellence Award, the award will be presented to Ishan Saxena, Class 6C for ISO, Regional Rank 41, Panchal Sethia, ISO, Regional Rank 14, Aditya Prakash, ICSO, International Rank 4. Ishan Saxena once again for IOEL, State Rank 22, and Ayan Shukla for IOEL again, State Rank 35. Thank you, ma'am. जैसा कि एसीपी साहब ने कहा था, बड़ा पुराना रिलेशन है, 16 साल से मेरा भी है। देवांशी 2008 में एडमिट किया नर्सरी, पास आउट 24। आहना पास आउट दिस ईयर। आहना डेली स्कूल से जाने के बाद में नानी का 5-7 मिनट उसमें टाइम लेना है। गांधी मैम ने ये किया, मेरा स्कूल द बेस्ट। वाइस प्रिंसिपल का 2-3 मिनट का लेक्चर। एंड भावना मैम, सी मिसेस यू वेरी बैडली। कल भी मम्मी से कहा आप छुट्टी लेंगी, ऑफिस नहीं जाएंगी, और मेरे को ये कि अगर वो नहीं जाती है तो आप और नानी ने तो जाना ही है, लाना ही है। आई आस्क्ड माय डॉटर नो, अगर उसने कहा है तो चलना है, छुट्टी लेके वो आई है तो प्राइस तो उसकी मम्मी लेगी। मैं आपको जैसा उन्होंने कहा 16 साल रेगुलर से, और मैं बड़ी खुद पीछे रहता हूँ, डेली स्कूल छोड़ना, पिकअप करके ले जाना। और मैं समझता हूँ कि जो एम्प्लॉई हैं शायद गार्ड से लेकर के और वाइस प्रिंसिपल तक, मैं बड़ा रेगुलर रहा हूँ। मैं कितनी प्रशंसा करूँ, ये नहीं कि मेरी दोनों ग्रैंड डॉटर यहाँ की पास आउट है,
मैं प्राउडली कहा करता मैं द्वारका में रहता हूँ और मैं लकी हूँ कि मेरी ग्रैंड डॉटर्स के एडमिशन यहाँ हुए थे। अपने मैं क्या बोलूँ, हम सब पास आउट है। जेन जी का मैं ग्रैंड फादर हूँ आज की भाषा में। लेकिन जैसा कि कहा, हमने भी ये कहा टाइम निकालना है। पर्टिकुलरली जब मैं बैठा था तो एक लेडी अपने हस्बैंड से इशारा कर रही थी, जब कहते थे टाइम निकालो बच्चों को दो, तो थोड़ा सा वो हो रहे थे। मैं प्राइवेट सर्विस वालों को समझता हूँ, उनके पास बहुत पैसा है, टाइम नहीं है। हम सरकारी के पास टाइम ही टाइम है। हमने अपने बच्चों को बहुत दिया, ग्रैंड चिल्ड्रन को बहुत दिया, और मैंने तो 3 बार ABC सीखी। जब खुद पढ़ा तो ABC सीखी, अपनी डॉटर्स को ABC सिखाई, ग्रैंड डॉटर्स को सिखाई। तो मैं तो बड़ा प्रिविलेज हूँ। मैं सबकी तरफ से आपको बहुत 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 धन्यवाद देता हूँ। और सच में भावना मैम जहाँ हो, Ahana still remembers you, she misses you very badly. बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत very much. I would like to express my sincere gratitude for organizing such a wonderful appreciation day. The event was very well planned and beautifully executed here. It was heartwarming to see every single child effort, and yes, that could be all can witness here very efficiently. The performances, the decoration, from smooth coordination till whatnot. So most importantly, the way the children have boosted up with the confidence and the way they have been come here in front of us. Such events motivate us every minute, every hour. And yes, it is not completed without the efforts of the parents, of course. And school, being school, yes, we are very lucky to be in Baal Bharati. And of course, the love and support from teachers, from principal ma'am, headmistress ma'am, vice principal ma'am, and the management really took us so well. Thank you so very much, ma'am. In Baal Bharati, my elder daughter passed out in 2020. The younger one is still performing. She is still performing in the next one. I really like the way, at the pace at which this school has grown. I've seen it when it started, and we are really proud that our daughter got admitted in this school. And then subsequently we have seen it grown from the old brick and mortar to online. We passed through COVID period also, and then we realized it that the pace with which the school has grown in adapting the technology, adapting new ways to teach is really commendable, and we really appreciate, and we request to ensure that all the good work get going. The only thing which we miss these days is previously there used to be annual functions. We have not seen it for quite not at that level. We have seen that at very grand level, and we still miss those functions. We request if that could be happen in next couple of years. Maybe next year my daughter will pass out from here, and that would be my association with this. Thank you, ma'am. Only one thing. We value the Indian knowledge systems that we are integrating with the modern technology. We want our children to portray that. And as you would have seen, a lot of Olympiads that our children are participating in, a lot of awards that they are getting, and a commendable achievement which we received day before yesterday was that our children amongst internationally, 2 of our students have qualified, and they are amongst 0.14%, which is a commendable thing. So looking forward to more and more and more awards. And now we have arrived at the final and perhaps the most awaited moment of our celebration. It has been a morning filled with pride, appreciation and inspiration. We have celebrated achievement, witnessed talent and applauded the remarkable journeys of our young achievers. But every great celebration deserves a grand culmination, and what better way to bring this wonderful celebration to its end than with the universal language of music. So we invite you to sit back, relax and let the rhythm of music carry you through the final moments of this memorable celebration. As the curtains draw towards the close of Appreciation Day 2026, we proudly present the School Orchestra.